So welcome everyone, a very good evening. बहुत बहुत स्वागत आप सभी का. Welcome. I hope all of you are doing well. First of all, let me congratulate all of you on making a brilliant decision of choosing law as a career. So well done. बहुत बढ़िया, बहुत खूब. Lots of things we are going to cover over the period of 1 year exactly. Right, you all know the exam will be conducted in the month of December. So lots of things we'll be studying today. Lots of things we'll be learning about the section, the most dreaded section, that is general awareness and current affairs. Right. If we look at this year's the 2023 year's AILET paper, right, the general awareness section was relatively very easy. Right. If we look at the CLAT exam, the general awareness paper was comparatively tougher. But the one thing that you'll hear uniform, right? Everyone, be it AIR 1, be it our own AIR 18, be it AIR 76, be it AIR 100, 200, 400, 500, or it is someone who has not cracked the exam, everyone will together say that this section was tough. So when it is tough for everyone. राइट सभी के लिए टफ होता है. पर जनरल अवेयरनेस के लिए कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको बेयर मिनिमम करनी है, जहां पे आप बन जाते हो क्या, फ्रॉम योर पियर्स यू हैव दिस एडिशनल एक्स्ट्रा एडवांटेज. राइट, जब बाकी बच्चे 15 नंबर ला रहे हैं, वहां पे अगर आप 22 ले आते हो, राइट, जो 22 भी आउट ऑफ 35, 22 इज ऑल्सो 22 इज ऑल्सो नॉट बहुत बड़ा, बट 7 नंबर एक्स्ट्रा है बाकी बच्चों से. ये एडवांटेज दे सकता है आपको ये सेक्शन, जहां पे एवरेज मार्क्स क्या है, 15 से 20 एवरेज मार्क्स आते हैं जनरल अवेयरनेस में. राइट, और वहां पे अगर आप 25 ले आए, 27 ले आए, वो एडवांटेज है. वो एडवांटेज देने में आपको यहाँ पे आया हूं. तो चलिए जी, स्वागत कर लो भाई हमारा भी, और मैं भी आप लोगों का स्वागत कर लेता हूं. तो वेलकम एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का. हाय कृष्णा, हाय जिया, हाय रामेश्वर चौहान, वेलकम एवरीवन. A very good evening to all of you. सभी का बहुत बहुत स्वागत आपका. Hope all of you are doing well. तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा सेशन आज का, जहां पे हम काफी सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं. सबसे पहले आई होप आपने ये इंटरव्यू जरूर देखा होगा. मोटिवेशन, अगर कोई भी कमी है तो फटाफट से जाइए और यहाँ से मोटिवेशन फुल ऑन ले लीजिए. राइट, द इंटरव्यू ऑफ अनिका इज अवेलेबल ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ बायजूस एग्जाम प्रेप. डू नॉट मिस. राइट, फटाफट से जरूर आफ्टर द सेशन जाके जरूर ये चेकआउट कीजिएगा, बहुत मोटिवेशन मिलेगा फॉर श्योर. अब अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, हर सेशन में हम ये जरूर करते हैं. हु इज मिस वर्ल्ड 2021? अगर मैं आप सबसे ये सवाल पूछूं, सबसे पहले आप क्या करने लगोगे? आप सोचने लगोगे, अरे पता नहीं यार ये क्या पूछ के सर ने, ऐसा पता नहीं यार, मिस वर्ल्ड 2021 की हमें कैसे पता होगा, 2022 की तो अभी अनाउंस नहीं हुई है. चलिए सर, 2021 की लेटेस्ट क्वेश्चन है, पर हमें नहीं पता है ना. ज्यादातर आप क्या करेंगे, मनसा वाराणसी नाम सुना हुआ लग रहा है, ये कर देंगे. ये गलती अक्सर बहुत लोग करते हैं. राइट, तो बहुत ही सिंपल है. तरीका क्या है, व्हाट डू वी हैव टू डू हियर? राइट, बहुत ही सिंपल चीज है. मिस वर्ल्ड का आंसर हमें अगर नहीं पता, हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले करेंगे एक चीज जो आप सब करेंगे, आई एम श्योर. क्या करोगे? अगर नहीं आता कोई चीज तो क्या करोगे, आप आंसर पता करोगे कैसे? आप जाओगे गूगल पे. राइट, यू विल गो टू गूगल. फटाफट से आप गूगल करना स्टार्ट कर दोगे और देखोगे भाई कि क्या आंसर है इसका. जैसे ही गूगल करोगे, गूगल आपको बता देगा कि आंसर क्या है जी. पोलैंड की ये कैरोलिन बिलोस्का इज द करेक्ट आंसर. सो ए इज द राइट आंसर. अब जैसे ही आपको पता चला कि भाई मिस पोलैंड इज द करेक्ट आंसर, आपने इनकी फोटो देख ली, आपने इनके बारे में थोड़ा सा विकिपीडिया पे पढ़ लिया, थोड़ा सा रिसर्च कर लिया. जैसे ही आपने थोड़ा सा रिसर्च किया, क्या हो गया, ये डेटा चला गया सीधा का सीधा आपकी सबकॉन्शियस मेमोरी में. राइट, द डेटा वॉट एवर रिसर्च यू हैव डन इज डायरेक्टली नाउ देयर प्रिंटेड इन योर सबकॉन्शियस मेमोरी. जब भी फ्यूचर में कभी भी ये क्वेश्चन कहीं पे भी देखोगे, डेफिनेटली ये आप आंसर मार्क करोगे. राइट, दिस इज द पावर ऑफ सबकॉन्शियस मेमोरी. और जब हम जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं, इट इज लाइक एन ओशन. राइट, सागर है. अब इस सागर में से हम कितना रिटेन कर पाते हैं हमारे दिमाग में, ये टोटली डिपेंड्स ऑन द कैपेसिटी ऑफ आवर ब्रेन. किसी की कैपेसिटी बाल्टी जितनी होगी, किसी की कैपेसिटी मग जितनी होगी, किसी की लोटे जितनी होगी, किसी की टेस्ट ट्यूब जितनी होगी. ठीक है, सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन दैट. अब आप इस बकेट में, मानता हूं एवरेज बकेट ही मान लेते हैं सबकी, तो अगर आपकी बकेट फुल कैपेसिटी है, अब बकेट में पूरा समुद्र का पानी तो नहीं डाल सकते ना. क्या कर सकते हैं,
वी कैन बी स्मार्ट अबाउट इट। वो चीजें जो इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सिर्फ वो ही डालें तो कैसा रहेगा। ये एडवांटेज होता है जब आपके पास मेंटर्स होते हैं। व्हेन यू हैव मेंटर्स, दिस इज द एडवांटेज दैट यू हैव। तो ये एडवांटेज आपको मैं जरूर आपको दिलवाऊंगा, इसीलिए मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, इंट्रोडक्शन एंड स्ट्रेटजी। लेट्स बिगिन विद दिस। सो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस सेशन, सो ऑफ कोर्स फर्स्ट इज द टेकअवेज फ्रॉम द प्रीवियस क्लैट एग्जाम्स, द 2022 एज वेल एज द 2023। इन एग्जाम्स का क्या रहा हमारा पिछला हिसाब किताब, ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इन दिस सेशन वी विल लुक एट करंट अफेयर्स एंड जनरल अवेयरनेस इन वेरियस लॉ एंट्रेंस एग्जाम, और कैसे कैसे चीजें आती हैं, क्या क्वेश्चंस आते हैं, वो सब चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक ओवरव्यू दे दूं आपको क्लैट 2024 के लिए। तो देखिए दोस्तों, पैसेजेस जो हैं वो लगभग 25 से 30 के बीच में आएंगे, राइट। 2023 में पैसेजेस की संख्या कम कर दी, बट द क्वेश्चंस वर इंक्रीज्ड इन पर पैसेज बेसिस। तो ये सारी चीजें हैं। While researching about any country, what are the important things about that country that we should know? बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिया। So you should know about the head of that country, that is who's the president or the prime minister, right, या फिर chancellor, whatever the whoever is the head, right. So उसका नाम पता होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए capital of that country, right, capital is very important। हमें पता होना चाहिए currency of that country, this is also very important। uh, how is it related with India, relation with India, and recent news, ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए उसके बारे में, ठीक है। वेरी गुड जी हाँ, ये इंक्विजिटिवनेस जो है ना आपका, ये डेफिनेटली आपको एनएलयू में पहुंचा सकता है। बहुत बढ़िया, बहुत खूब, आई एम वेरी हैप्पी विद योर अप्रोच, वेल डन, शाबाश। चलिए, अलीना इज आस्किंग सर मेरी ये रैंक है, मेरे को क्या एनएलयू मिलेगा? बेटा इसके लिए डेडिकेटेड 1 घंटे का सेशन हमने जस्ट कंडक्ट किया है, वहां पे जरूर जाके चेकआउट कीजिए, आपको जरूर जवाब मिलेगा। अगर नहीं मिलता है आप वहां पे मुझे कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर, राइट। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे आपको पता है व्हेन वी टॉक अबाउट CLAT, right, you can see 2024 के लिए is all the sections, English, GK, legal, logical, quant, these are the 5 sections, 30, 35, 40, 30, 15, this is how the questions are, right. Per question +1, negative marks is 0.25, 120 minutes the exam duration is. So this is the overview of the same. If you look at the number of questions in general awareness which came in various exams in the year 2022, अभी आपको पता है 2023 वाले सिर्फ CLAT और AILET हुए हैं, इसलिए I am sharing you the data of 2022, राइट। तो आप देखेंगे कि CLAT के 35 इस बार भी 35 ही थे, राइट। AILET के 30 इस बार भी 30 थे। So 12 in SLAT, JAMIA 75, MHCET there were 30. So lots of questions across various entrance exams are from general awareness. So it's a very important section. Hi Shivaji Ganesh, welcome buddy. Alright, so when we talk about the topics which were asked, so if we look at 2022, I will also share 2023 today. So 2022 की अगर हम बात करें, देखिए आप यूनियन बजट के ऊपर there was a passage. This exam was conducted in the month of July. This is the last CLAT exam which was conducted in the month of July. This year we know for 2023 students it was conducted in the month of December. Next year also it will be there in December. So the passages in the year 2023 were majorly from the month of November, so 1 month before the exam. And here union budget, February, dated February, you can see. ISRO, it was a static passage, right. Then maritime Sagar initiative published in the Sunday Guardian 12th March, right. So you can see it is spread across various months from January to March, all these articles were drawn from. And if you look at 2023, just 1 month before the exam, the passages were derived from. So ideally, if you look at the entire timeline and you look at the kind of questions that are asked, look at this: international relations, exercises between nations, the budget, that is economy related news, space related news, AFSPA withdrawal, army military related news, corporate social responsibility, CSR, look at this green technology, environment, of course, all these are super duper important for us, right. So key takeaways from the previous years of CLAT considering current affairs and general awareness. Number 1, no specific months. You have to study last 12 months till the date of your exam, of course. So December to December in a nutshell for you. So what is the timeline to study? December to December. Unimportant news can also be asked in the exam, so be prepared
for questions which you are not expecting, right? Say for example, what is the currency? Say Ji, I just asked this question also a little while back कि sir currency के क्या क्या question और पूछ सकते हैं country के बारे में, तो currency पूछ सकते हैं. Now everyone is talking about, let's say there is a bilateral military exercise between India and US example. तो उस bilateral military exercise के बारे में सवाल आ सकते हैं. यहाँ पे who is the head of the defense of India as well as US डिफेंस मिनिस्टर कौन है, either ways these question can also be asked. So इस तरह से related questions भी पूछे जा सकते हैं हमसे. कुछ important लगे, हो सकता है कुछ हमें ना भी important लगे, वो भी चीजें हमसे पूछी जा सकती है. 360-degree knowledge about topics is important, and especially now more emphasis also has to be given to static GK about that topic. तो जो भी टॉपिक है उससे related static GK क्या है जो पूछी जा सकती है, वो हमें पता होनी चाहिए. फिर स्टैटिक जीके गिव्स यू अ पर्सपेक्टिव, अ बेस टू अंडरस्टैंड करंट अफेयर्स. ठीक है, तो स्टैटिक जीके के ऊपर भी वी शुड हैव अ वेरी गुड कमांड. इफ वी लुक एट AILET और वी लुक एट CLAT, lots of exams you will find that lots of questions are equally divided between current affairs and static. तो अगर आप देखें, चाहे आप CLAT ले लें, चाहे आप AILET ले लें, चाहे आप कोई भी एग्जाम लें, there is a healthy mix of static GK and current. What is static and what is current, guys? Static is something which is stagnant, history जो change नहीं हो रहा टाइम के साथ, currency etc. और current क्या हो जाता है, जैसे कि अभी प्राइम मिनिस्टर कौन है, who is the current vice president. So these are examples of कि अभी क्या हो रहा है. These are current news which is happening right now. Static which has happened earlier. So it's a healthy mix of all the things. If we look at, you can see a symbiosis entrance exam. The major questions in the symbiosis were actually that of current affairs, and just one question was there out of the 12 was static GK. But this can change this time round. It can be a case of 6 in current affairs, 6 in static, or it can be 10 in static, 2 in current. So you have to be prepared that no matter what question the examiner throws at us, we should be prepared. If we look at Jamia, look at this. Only 3 questions came from current affairs, and majority 72 questions were there on static GK and general studies. So this is an important point in our preparation, where we understand that the importance of static as well as current is equivalent, and make sure that you take a note of it. Chaliye. So there is a very good question. Anas has asked me, sir, can you suggest something for Jamia preparation exclusively? For Jamia preparation, beta, I will definitely recommend you to have a good command over medieval India, history of medieval India. Have a good command over that. Apart from that, make sure that you practice the previous year papers of the same, and also practice mock tests that are available here at BYJU'S Exam Prep also. So make sure that you do apply here. Chaliye. So practice, the more practice you do, bigger the advantage. All right, let's talk about general awareness. Now, usually in this section, there are passages over the past 4 years have been be 2020, 2021, 2022 or 2023. The passages have been roughly around 450 to 500 words long, right? So these passages are derived from various newspapers, be it the Hindu, Indian Express, the Guardian, as we saw, right? Various passages. It can be from a website also. It can be a Government of India website. So from varied sources, they actually are asking us all the questions. So the idea is not to find the answers in the passage itself. The idea is to quickly grasp what the passage is actually saying, and just quickly glance through the same and move on directly to the questions. Save time in this section so that you can use it elsewhere, right? So this is absolutely important. Anas, just the practice material, beta. Whatever study material you have used for CLAT, AILET, it's just an extension of the other exams, right? Chaliye, if we look at topics to focus on when we talk about general awareness, obviously international affairs is very important. We saw that the dedicated passage came. Ukraine-Russia conflict also came in the year 2022, so very important. Political affairs is very important, of course. National and state affairs is again super duper important. Supreme Court judgments is very important. Awards, right? This year also Nobel Prize was asked. Even the 2020 winner was also asked because of him being in the news. Science and technology, again a prominent mathematician name was actually asked. Government schemes, frequently asked. Contemporary events of significance from India as well as the world is asked.
arts and culture, historical events of continued significance is also asked. Sports and defense, very important this year. FIFA was asked, so it was actually shared with the students that definitely expect a question, a passage on FIFA. They conducted dedicated sessions on FIFA numerous times, so this is there. Then summits and conferences are also there, which can be asked in the exam. So be prepared for all of these things. Now, let's talk about the best tool that you all have at your disposal. To prepare for your entrance exam, newspaper is very, very important, not just in your general awareness, but your entire preparation. When we talk about newspaper, why should you read newspaper? Of course, every student right now studying it at NLSIU, Nalsar, NLU Delhi, everyone will tell you the same thing, that newspaper reading is super duper important, and we did that. Right? You can read any newspaper that you can get your hands on, any English daily. Times of India, Hindu, the Indian Express, whatever you can find at your nearby places, right? Start reading, build reading habit. Once you are done, once you're bored, let's say in 3-4 months you are bored with a particular newspaper, definitely आप शिफ्ट कर सकते हो. जैसे मान लीजिए you start with the Hindu, you get bored क्योंकि थोड़ी English tough है, थोड़ा switch कर लिया, Times of India कर लिया आपने. So this is something which you can definitely do, right? But do not leave it all together. Not everything is to be read, right? You have to be selective here, right? And selective कैसे बनेंगे? By attending all the classes, of course, by attending all the sessions, of course. So if you're someone who's watching us and is yet to subscribe, अरे भाई बिल्कुल गलती मत करना, फटाफट सब्सक्राइब का बटन दबा दो, और लाइक का बटन दबाने में भी कंजूसी नहीं करनी है. फटाफट से लाइक भी कर देना भाई, हमें भी पता चले मजा आ रहा है आप सबको, समझ में भी आ रही है चीजें. So target is to complete the newspaper within 30 to 60 minutes, right? तो ये भी जरूरी है समझना. अब न्यूज़पेपर कौन सा रेकमेंड करते हैं हम? द हिंदू वी रेकमेंड, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड, हिंदुस्तान टाइम्स, विच एवर इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर यू कैन गेट योर हैंड्स ऑन. आपके एरिया में जो भी मिलता है. सबसे जरूरी सोर्स आपके लिए क्या है? ऑब्वियसली अपार्ट फ्रॉम द क्लासेस एंड योर क्लास नोट्स, अपार्ट फ्रॉम दिस सबसे जरूरी सोर्स क्या है? इनके अलावा वो क्या है? देखिए आप, CLAT Ignite magazine, very important it is. द गवर्नमेंट जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है उनकी वेबसाइट, द गार्डियन, द वायर, दीज आर इंपॉर्टेंट ऑनलाइन सोर्सेज. वायर से बहुत सारे रेगुलरली पैसेजेस आए हैं in the previous years, so very important these are. Apart from this, if you look at all these the past now तो 5 years हो गए, तो 5 साल की अगर हम 3 से 5 साल की अगर हम हिस्ट्री उठा के देखें क्लैट की, तो ये लगातार यहीं से क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं. These are the sources. So what are the advantages of reading newspapers? Guys, let's talk about it. Number one, it improves our vocab. Of course, helps us in our vocab building. For sure, it improves our English language. Definitely, it helps us, in terms of confidence. We are more aware about things. Wherever we go, we have an opinion about things because we have read about things. So improves our reading skills and our logical skills as well, right? It gives us reasoning, right, which is absolutely super duper essential for an exam like CLAT, AILET and any other exam. It makes you grammatically sound with perfect सेंटेंस फ्रेमिंग एज वेल. इतना ज्यादा ग्रामेटिकली करेक्ट चीजें पढ़ते हो आप, आदत पड़ जाती है ग्रामेटिकली करेक्ट होने की. मेक्स यू अवेयर ऑफ द करंट हैपनिंग्स अराउंड द वर्ल्ड, ऑफ कोर्स करंट अफेयर्स. To get better results in exam, you need to learn constantly. Let's understand this very simply. 20,000 plus words there are in the entire paper, right? More than 20,000 words there will be. आउट ऑफ दीज 20,000 वर्ड्स, जो 20,000 से ज्यादा शब्द होंगे, आपको क्या ध्यान रखना है? इनमें 20,000 से ज्यादा वर्ड्स हैं. यहाँ पे आपको 120 मिनट्स में यू हैव टू रीड ऑल ऑफ देम एंड देन यू हैव टू मार्क द आंसर एज वेल इन योर OMR. सो मार्क आंसर्स प्लस रीडिंग, ऑल दिस इज डेफिनेटली अ टाइम टेकिंग टास्क. तो इस वजह से practice is important, and regular reading of newspaper is nothing but building your habit of completing 20,000 words in a span of 90 minutes. This is our goal. We have 1 year to do this, and once we achieve this, we will be a force which nobody can defeat. ये आपको अचीव करना है, ये हमको मिलकर अचीव करना है. In CLAT, if we look at all the previous years, CLAT Ignite magazine, there are direct questions from this magazine which come in the exam. So it's a no-brainer, guys. The PDF is available on the app.
do download the BYJU'S Exam Prep app if you haven't downloaded it already. This is a quick glance of how the magazine looks like. So there is a detailed table of contents which is available to you. Everything that is important for that particular month is available in this format. So in a nutshell, in let's say 100 odd pages, the entire events which are important for us with respect to our exam, we'll be covering it over there, right? So this you have to keep in mind, right? Of course, to reach where Anika is right now, right? She's cracked NLS Bangalore. She's cracked, apart from NLS Bangalore, she's also cracked and New Delhi, right? With flying colors, of course. Apart from her, there are more than 40 people more, right, who have aced this exam with flying colors. Regular students of BYJU'S Exam Prep. We'll be covering all the interviews in the future sessions as well. I hope all of you have seen Anika's interview, which is available on the BYJU'S Exam Prep platform. If you haven't, immediately go check that out. आपको जरूर 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 वो check करना चाहिए immediately, right? काफी सारी clarity मिलती है, lots of insights she has shared with us, so do not miss on that. बिल्कुल छोड़ना मत उसको. इसी के साथ, if you are preparing for the year 2024, we are there to guide you till the एंड राइट, आपका हैंड होल्ड करेंगे बिल्कुल जिस तरह से हमने फॉर इयर्स, राइट, मी एंड all the other faculties here at BYJU'S Exam Prep, whatever we have done for all our students, we'll make sure that we leave no stone unturned to make sure that you reach your dream NLU. So very important, once you enroll for the 2024 comprehensive course, what will you get? You will get 300 plus recorded videos across 5 sections. You will get 300 plus hours of live classes, 35 mock tests for CLAT, and lots of other mock tests for other exams, AILET and SLAT and other exams, and you'll have video solutions for them. So just imagine, if you have a doubt for a particular question or in a mock, आप जाके देख सकते हो video solution सीधा. Monthly e-magazine current affairs, just like we saw the CLAT Ignite, whatever event has happened जो important है हमारे exam के लिए, वो हमने वहाँ पे आपके लिए cover करके रख दिया. Content has been curated based on extensive analysis of the past 5 years of the CLAT paper, and National University alumni, IIM alumni, they are the ones who are actually creating this for you. So you can understand it's a great opportunity and not to be missed. Right? What do you need to do? Just to make sure that you enroll ASAP, just call on this number 9538895678. Just call on this number and have a word with our ACE counselor who will guide you throughout. Sir, I have this much rank in my exam. How will I get? We conducted a dedicated session, guys. Right? Danny, we just conducted a dedicated session, just before this one, a 1 hour long session where we discussed all these queries. Do check it out over there. And in case you do not get your answer there, please mention your doubt in the comments. I'll be more than happy to answer all your queries, right? I'll definitely do that. So that's it. How many words per minute is good enough, sir? Shivaji is asking. Better try as many as possible. When you'll begin, it will be hardly 30 to 40. Right? Gradually, you'll keep on getting better and better and better. Right? We have to make sure that you reach, 200 words per minute. Right? This is what we actually want you to reach. Obviously, strive to reach. You can't go there directly in 1 day or 2 days or 3 days. You will require time, you require mentoring, and we are obviously there till you reach there. Right, so make sure, guys, if you haven't subscribed already to YouTube channel, make sure you do that immediately. Hit the subscribe button, press the bell icon so that all the important videos that we bring to you, right, you don't miss out on them. Right, and follow us on all our social media handles. The details are mentioned in the description of the video. If you have any question, any doubt, feel free to reach out in the comments of the video. I'll be more than happy to answer each and every one of you present here. So बहुत बहुत मजा आया आप सबके साथ बात करके. थैंक यू सो मच. सर जामिया का प्रिपरेशन होगा बाईजूस पे, बिल्कुल होगा उस्मा, सो बने रहिएगा. एंड इन केस ऑफ एनी डाउट, द नंबर दैट आई हैव शेयर्ड, प्लीज फील फ्री टू रीच आउट. थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय. बहुत मजा आया आप सबके साथ इंटरेक्ट करके. विल मीट अगेन रियल सून. टिल देन, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय.